Hello dear students, welcome back to our today's class, and today we are going to complete our this chapter, that is study of sound. Okay, so everyone pay attention and be with your textbook. Okay, and look into your textbook, look into your this video tutorial video, and mark some important points and pay attention towards it. Before moving to our today's topics, let's revise what we have learned in our last class. Okay, so we have learned in the last class a very interesting topic, that is reflection of sound. Okay, so what we have learned in this, here you can see this is the incident sound. Okay, this is a reflected sound. Okay, and here you can see this is a perpendicular. Okay, here this is a wall, cardboard, and this is the clock. Okay, so what we have to do in this kind of activity, here you can see a clock, and here you have to place your ear towards this cardboard, and you have to listen to the ticking of this cardboard. Okay, that means you will able to see the reflection of sound from one part to the another part. Okay, from one cardboard to the another cardboard. So that is the thing which we have learned here. You can see, like the light waves, sound waves also get reflected from a solid or a liquid surface. Here we have used a solid surface. Okay, and a small or a rough surface is needed for a reflection of sound. Okay, a smooth surface or a rough surface is needed for the reflection of sound. So here you can see the direction of the incident sound wave makes equal angle. This is the incident sound waves. Okay, which makes an equal angle with the perpendicular. Here you can see a perpendicular, this dotted line, it shows a perpendicular to the surface. Okay, and all the three lie in the same plane, and this is what, this is the reflected sound. Yes, and here you can see all this is all this shows the same direction. ये एक ही डायरेक्शन है, एक ही मीडियम में इंसिडेंट साउंड, रिफ्लेक्टेड साउंड एंड परपेंडिकुलर जो है वो लाई करते हैं. सो इट इज़ everything is in same plane. Okay, yes, then we have seen good and the bad reflectors of sound. Yes, so what are the good reflectors of sound? Some hard surface, flat surface, for example wall. Okay, cardboard, these are the good reflectors of sound. Okay, and what is the bad reflectors of sound? For example like paper. Okay, thin जो part होते हैं, yes, so they are called as what? These are the bad reflectors of sound. Now echo is what? You have seen an example of hill station, कि जब भी हम कोई हिल स्टेशन पे या कोई ऐसे पुराना फोर्ट होता है, वहाँ पे अगर जाएंगे तो क्या होता है, यू विल सी द रिपीटेशन ऑफ योर साउंड. ओके, वैन you used to talk to someone, you will see its repetition. और हम अगर ज़ोर से आवाज़ देंगे तो उसके तुरंत कुछ सेकंड बाद हमको वही आवाज़ रिपीटेशन में सुनाई देती है. सो दैट इज़ कॉल्ड एज वॉट? दैट इज़ कॉल्ड एज echo. Okay, so an echo is what? It is a repetition of original sound because of reflection by some surface. तो वहाँ पे क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है, अपने साउंड का रिफ्लेक्शन होता है. दैट्स वाई यू विल एबल टू हियर द सेम साउंड अगेन. ओके, येस, सो दैट इज़ एन इको. आफ्टर दैट रिवर्बरेशन. रिवर्बरेशन में क्या होता है? साउंड वेव्स जो है इट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द वॉल्स एंड द रूफ ऑफ अ रूम मल्टीपल टाइम्स. तो यहाँ पे देखो, साउंड वेव जो है वो मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट होते हैं, एक ही टाइम पे रिफ्लेक्ट नहीं होती. इट गेट्स रिफ्लेक्टेड मल्टीपल टाइम्स. ओके, एंड दिस कॉजेज अ सिंगल साउंड टू बी हर्ड नॉट वंस बट कंटिन्यूसली. तो मल्टीपल टाइम अगर वो क्या होंगे, रिफ्लेक्ट होंगे, तो हमें भी साउंड जो है वो मल्टीपल टाइम ही सुनाई देगा. ओके, जैसे कि यहाँ पे हमको एक ही बार साउंड सुनाई दिया था एको में, बट हियर रिवर्बरेशन में क्या होता है? रिफ्लेक्शन ही मल्टीपल टाइम होता है, तो साउंड भी जो है वो मल्टीपल टाइम ही सुनाई देगा. ठीक है, सो दैट इज़ कॉल्ड एज व्हाट? रिवर्बरेशन. ओके,
And after that we have seen a sonar technique, which is basically used in ships, okay, to see the depth of the sea, and it is used for the various purpose in the sea. Yes, so sonar, it is what it is a short form of sound navigation. It is used to determine the direction, distance, speed of underwater objects. Okay, so sonar technique is very useful to measure some underwater objects, to see the direction, to talk to the person which is there over here. Here you can say transmitter, receiver. तो यहाँ से waves जाके रिसीवर जो है वो रिसीव करते हैं. ठीक है. सो दिस इज़ अबाउट योर सोनार टेक्निक. नाउ this is about your last class revision. Now today a very interesting, a very useful topic, that is sonography. sonography वर्ड जो है वो सबने सुना है, बट एग्जैक्टली क्या होता है दैट यू डोंट नो. ओके, इट इज़ रिलेटेड टू साउंड. ओके, and what was that, what is that we are going to see today. Okay, it is very easy topic. Now here the sonography technique क्यों यूज़ होता है? It uses ultrasonic sound wave to generate the images of internal organs of the human body. बेसिकली क्या होता है, सोनोग्राफी कब करते हैं? जब हमारे कुछ इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज होता है, स्वेलिंग होता है, तब हम जो है वो देख नहीं सकते उसको. दे आर बिकॉज दे आर वॉट इंटरनल ऑर्गन्स. सो दैट्स वाई वॉट वी यूज़ टू डू अ सोनोग्राफी. डॉक्टर क्या करने को बोलते हैं? सोनोग्राफी करने को बोलते हैं, सो दैट वी विल एबल टू नो दैट वॉट इज़ रॉन्ग विथ आर इंटरनल ऑर्गन्स. ओके, कहाँ पे क्या डैमेज हुआ है, and after that we will take some kind of medicine, we'll take a proper diagnosis, and from that we'll able to be normal. okay, तो जब internal organs को डैमेज होता है, at that time we used to do sonography. and sonography कब होता है? pregnancy में. yes, to see the movements of, to see the baby is there, it is in what condition. okay, so for that sonography technique is very used. so this is useful in finding out the cause of swelling, infection, pain. हाँ, तो अगर इंटरनल ऑर्गन्स में स्वेलिंग होती है, इन्फेक्शन होती है, पेन होता है, तो it will able to know, it is used to let us know that what are the causes of that paining and that infection. okay, and the condition of the heart, the state of the heart after the heart attack, as well as the growth of fetus outside the womb of a pregnant woman are studied using this technique. yes, I have told you earlier, same thing happens in this, and this technique is used to determine this kind of things. ठीक है. ओके, नाउ दिस टेक्निक मेक यूज़ ऑफ अ प्रोब एंड अ जेल. तो यहाँ पे दो जो थिंग है वो वेरी इंपॉर्टेंट है. दैट इज़, ये टेक्निक में क्या होता है, प्रोब का यूज़ होता है एंड अ जेल, और अ जेल का यूज़ होता है. ओके, द जेल इज़ यूज टू मेक अ प्रॉपर कॉन्टैक्ट बिटवीन द स्किन एंड प्रोब, so that the full capacity of the ultrasound can be utilized. तो जेल का क्या यूज़ है, जेल क्या करते हैं हम, जेल का क्या करते हैं? सो जेल इज़ अप्लाइड टू द स्किन आउटसाइड द इंटरनल ऑर्गन टू बी स्टडीड. ओके, तो जिस इंटरनल ऑर्गन का हमें सोनोग्राफी करने का है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, जेल लगाते हैं. ठीक है. येस, and after that a high frequency ultrasound is transmitted inside the body with the help of the probe. तो प्रोब की मदद से क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड जो है वो बॉडी के इनसाइड ट्रांसमिट करते हैं. ठीक है. हियर यू कैन सी अ जेल इज गेटिंग अप्लाइड एंड द थिंग्स ultrasonic sound is also used to make the things happens. okay, नाउ द साउंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द इंटरनल ऑर्गन. तो अभी क्या होता है, साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट होता है इंटरनल ऑर्गन से एंड इज़ अगेन कलेक्टेड बाय द प्रोब. और वो जो साउंड है, रिफ्लेक्टेड साउंड, वो कैसे कलेक्ट होता है, बाय द प्रोब एंड फेड टू अ कंप्यूटर which generates the image of the internal organ.
तो ये टेक्निक होने के बाद वो यहाँ पर आ जाता है, ओके, कलेक्ट हो जाता है कंप्यूटर पे, एंड थ्रू दैट वी विल एबल टू सी द इमेज ऑफ आर इंटरनल organs or the image of whatever the gel we have applied on the internal organs. तो उसका हमें क्या मिलता है, image. As this method is a painless, it is increasingly used in medical practice for the correct diagnosis. पेन नहीं होता है इसमें, इट इज़ पेनलेस. एंड नाउअडेज तो बहुत सारा, मतलब अगर कुछ हुआ भी होगा लाइक दैट योर स्टमक इज़ पेनिंग, यू डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, तो क्या बोलते हैं डॉक्टर्स, सोनोग्राफी करो. ओके, तो फ्रॉम द स्मॉल एज ऑफ द स्टूडेंट्स ओनली टू द एल्डर वन, all are getting connected with this technique nowadays, as it is very useful and it will give you the correct cause of your pain, your whatever damage has done. So this technique is very very useful. Okay, so this is about your sonography technique. Now again a very interesting topic, that is human ear, structure of human ear. All of you are aware about that the ear is an important organ of human body. Yes, कभी कभी हमारे ईयर में अगर कुछ मतलब ऐसे स्वेलिंग होता है, ओके, तो हमें अच्छे से सुनाई नहीं देता है. एट दैट टाइम यू विल फील लाइक समथिंग इज़ रॉन्ग विथ मी. ओके, तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम वैसे ही होता है. कभी कभी हमको अच्छे से सुनाई नहीं देता है, और कुछ अगर कुछ डैमेज हुआ होगा, कुछ हुआ होगा ईयर के अंदर, तो इट इज़ वेरी वेरी पेनफुल एंड यू विल सी दैट कि क्या हो रहा है हमारे साथ. सो लाइक दैट, सो ईयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. वी हियर द साउंड बिकॉज ऑफ आवर ईयर. येस, व्हेन द साउंड वेव्स, तो यहाँ पे देखो एक ईयर ड्रम है, हियर यू कैन सी दिस इज़ द ईयर ड्रम. सो व्हेन द साउंड वेव्स फॉल्स ऑन द ईयर ड्रम इट वाइब्रेट्स. तो ये क्या होता है, वाइब्रेट होता है. These vibrations are converted into electrical signal which travels to the brain through the nerves. तो जब भी हम कुछ साउंड सुनते हैं तो ये क्या होता है, ईयर ड्रम पे आके फॉल हो जाता है दैट साउंड एंड इट गेट्स वाइब्रेट. आफ्टर दैट क्या होता है, द वाइब्रेशन जो है वो कन्वर्टेड होता है इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल. ओके, एंड इट विल गेट कनेक्टेड टू द ब्रेन थ्रू द नर्व. Okay, now here you can see there are the three parts. The ear can be divided into the three parts. First जो है वो outer ear है, here you can see इसको पिन्ना भी बोलते हैं. outer ear जो हम बाहर से देखते हैं, ओके, जो हम बाहर से देखते हैं अपने ईयर को, that is called as outer ear. So the outer ear collects the sound wave and passes them through a tube to a cavity in the middle ear. तो आउटर ईयर क्या करते हैं, साउंड को कलेक्ट करते हैं और ये जो कैविटी है वो कैविटी के थ्रू उसको अंदर डालते हैं थ्रू द मिडल ईयर. किसको अंदर डालते हैं, साउंड को, साउंड वेव को. ओके, सो हियर यू कैन सी दिस इज़ अ फनल शेप. फनल कैसे होता है, स्टार्टिंग से बहुत ऐसे ब्रॉड होता है और फिर बाद में जो है वो एकदम शॉर्ट टाइप होता है, थीन होता है. तो वहाँ पे वैसे ही स्ट्रक्चर है हमारे ईयर का. हियर यू कैन से दिस इज़ अ ब्रॉड स्ट्रक्चर और यहाँ पे ये थीन हो गया, सो दैट अ करेक्ट काइंड ऑफ साउंड गेट्स एंटर्ड इनटू योर ईयर. ओके, सो फर्स्ट क्या है ये आउटर ईयर, दैट इज़ कॉल्ड एज पिन्ना. नाउ येस हियर, हाँ, तो इट इज़ अ funnel like shape which helps to collect and pass the sound into the middle ear. तो ये साउंड को कलेक्ट करता है और मिडल ईयर में उसको सेंड करता है. नाउ द सेकेंड इज मिडल ईयर. व्हाट इज मिडल ईयर, हियर यू कैन सी there is a membrane in the cavity of the middle ear called the eardrum. Yes, I have already said this is called as eardrum, which is there in middle of the ear. When the compression in the sound wave reaches the eardrum, the pressure outside increases and it gets pushed inwards. तो हम सब ने देखा है कि compression के टाइम पे क्या होता है,
डेंसिटी हाई रहता है, प्रेशर हाई रहता है, एंड रेरफैक्शन के टाइम पे सब कम रहता है. ओके, दिस वी हैव ऑलरेडी लर्न इन आवर लास्ट क्लास. तो कॉम्प्रेशन के टाइम पे क्या होता है, साउंड वेव जो है वो ईयर ड्रम की यहाँ पे आते हैं और द प्रेशर आउटसाइड का प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है एंड इट गेट्स पुश्ड इनवर्ड. तो जब आउटसाइड का प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा तो साउंड वेव जो है वो जल्दी से इनवर्ड पुश हो जाएंगे. ओके, येस. द अपोजिट हैपन्स व्हेन रेरफैक्शन रीचेस ईयर. तो रेरफैक्शन के टाइम पे क्या होता है, सब कम रहता है, डेंसिटी भी कम रहता है, प्रेशर भी कम रहता है. येस, तो प्रेशर आउटसाइड क्या होता है, डिक्रीजेस एंड द मेम्ब्रेन गेट्स पुल आउटवर्ड्स. अपोजिट होता है. कॉम्प्रेशन के टाइम पे इनवर्ड पुल होता है, कॉम्प्रेशन के टाइम पे इनवर्ड पुल, एंड रेरफैक्शन के टाइम पे आउटसाइड पुल. सो दिस thus the sound wave causes vibration of the membrane. And the third part is the inner ear. So the auditory nerve collects the inner ear to the brain. Okay, auditory nerve जो होते हैं वो connects the inner ear सबसे inner वाला ear to the brain. तो वो brain से connect होते हैं. The inner ear has a structure resembling a shell of snail. Here you can see a snail का structure है, तो उसको क्या बोलते हैं, cochlea. Okay, so it is called as cochlea. It is very important, huh? So here you can see a snail-like structure. It is called as cochlea. The cochlea receives the vibration coming from the membrane. तो cochlea क्या करता है, it receives the vibration, okay, coming from the membrane and converts them into the electrical signal. और electrical signal में उसको convert करता है, which are sent to the brain through the nerves. और फिर बाद में वो brain को send करते हैं through the nerves, and then the brain analyzes this signal and we will able to understand what the person is saying through the sound wave. Okay, so it is a very long process, but the structure of ear is very easy. Outer ear, okay, then this is what, middle ear, and this is inner ear. Okay, yes. So today we have seen the sonography technique and the structure of human ear. Go through the video. Thank you.